but it was almost like people were resistant to new ideas, change. Even culture पे इतने सवाल थे कि ये तो हमारा तरीका ही नहीं है, ये तो तुमने ये तो इंडियन तौर तरीके हैं, ये वो. Is that something that still comes up in your work, which Oh, is like really active? 101%. I think the difference of this is Indian and this is Pakistani and this is Hindu and this is Muslim and Yeah, सबसे ऊपर ये बहुत high तो हमारा होता ही नहीं है. yeah, But I think that can only be shaved off if you read, if you understand, if you know culture. And I mean culture की मैं पहले बात अगर कर रहा हूँ कि if somebody says कि एक आदमी प्रिंट नहीं पहन सकता because mm, वो गलत है, वो हमारा mm, कल्चर नहीं है. एक तो कल्चर नहीं, अगेन वो ट्रेडिशन नहीं है हम yeah, कहते हैं. सेकेंडली अगर किसी को पता हो कि अल्लाह भला करे, हमारे जो एक्चुअली कल्चर नहीं है वो ये था कि प्रिंट वाज आवर कल्चर. मेन एंड वुमेन वोर द सेम क्लोथ्स, देयर वाज नो डिफरेंस. प्री ब्रिटिश पीरियड शेरवानी आई ही ब्रिटिशर्स की वजह से है बिकॉज दे वांटेड टू टर्न इट इनटू अ कोट. yeah, सो दे yeah, यूज्ड टू वेयर दीस लॉन्ग कोट्स. और जो हमारा घघरा था जो आदमी पहनते, जो अंगरखा होता था, जो हमारे मुगल्स पहनते थे एंड देन yeah, सिख पहनते थे, उसी को उन्होंने शिफ्ट करके शेरवानी बना के मेल फीमेल अलहदा किया. हमारा शलवार कमीज तो हमारा है ही नहीं. आई थिंक सलवार इट कम्स फ्रॉम आई थिंक टर्की या ऊपर से आता है. आई माइट बी रॉन्ग बट इट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. right, हमारी वो चीजें आती हैं. सो ये तो भी हमारी नहीं है. तो हम कैसे कह सकते हैं ये चीज ही हमारी नहीं है जबकि वे लिटरली द क्रॉसवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारी mm, जगहों से चीजें निकलती हैं, आर्ट निकलती हैं. हमें तालिब इल्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता. हम समझते हैं लिबरल जो है वो लिबरल आर्ट्स जो है वो एक बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. लाइक आई सेड बिफोर, इट्स नॉट. हमें yeah, जब नेपोलियन, पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नेपोलियन क्या करता था, जहां पहले जाता था सबसे पहले लाइब्रेरीज जलाता था. वो जब आप right, लाइब्रेरी जला देते हो ना तो आप एक्चुअली उन लोगों को उन्हीं की हिस्ट्री खुद से बताते हो, अपने तरीके से बताते हो. तो हमारे साथ यही हुआ है कि हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री किसी और से सुनी है. पहले वो mm, हमें जो हमारा ब्रिटिश राज था वो बता के जा रहा था. जब वो चले गए देन वी क्रिएटेड दिस कंट्री. सो इट ऑल बिकेम अबाउट द इस्लामिक thought, but it wasn't an Islamic thought because Islam is probably one of the most loving and most accepting religion. yeah, आपको then our identity was being told by our elders. Then we are gonna tell our identity to our. So it's generational trauma. yeah, That's what yeah, I call it. yeah, So उसमें क्या होता है, हम कल्चर को शन कर देते हैं. हमें जब पता ही नहीं है चीजें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होता आ रहा था, हम कहाँ गलत हुए, कहाँ पे किया, तो वो चीज की बात वहां पर आ गई. सेकेंडली जहां तक म्यूजिकली अगर हम देखें या इंडस्ट्री वाइज देखें कि देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस बिफोर कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, वो अभी भी होता है और वो होता mm, रहेगा. mm, बिकॉज आई थिंक उसकी, इट माइट साउंड रियली मीन एज वेल, बट उसकी एक बहुत अच्छा जो चीज है ना जो आप सीख सकते हो थेरेपी पे जाने से. व्हेन यू गो टू थेरेपी राइट, यू एक्चुअली रियलाइज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड दैट इज बिकॉज कि अगर दूसरा आप पे चीख रहा है ना तो वो आप पे इसलिए नहीं चीख रहा बिकॉज वो आप पे गुस्से है, वो इसलिए चीख रहा है बिकॉज ही इज बिकॉज वो अपने पे गुस्सा है. राइट. एंड देन सेकेंडली आप एक और चीज सीखते हैं थेरेपी पे विच आई फाउंड वेरी ब्यूटीफुल was the fact that if I cannot, if I don't like something because I'm scared of doing it, if I see somebody else doing it, I will judge them. mm, बिकॉज मेरा जमीर कहता है कि ये मेरे जमीर ने मुझे इतना मना किया था करने से कि मैं नहीं कर पाया, तो वो कैसे कर रहा है, तो पहले मैं उसको रोकूंगा और मैं उसको बुरा भला बोलूंगा और मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, फिर मैं उसके साथ ये करूंगा और फिर इन दी एंड जब वो कर लेगा तो फिर मैं कहूंगा अच्छा उसने कर लिया तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ, yeah, बिकॉज yeah, दैट्स yeah, हिज सेल्फ जर्नी. सो आई थिंक उसमें क्या होता है कि वो एक जंग चलती रहती है कि आपको कोई मना कर रहे हैं और आप मना हो रहे हैं और वो मना कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो हम रुक जाते हैं उसके अंदर. But without that saying, yes, there are these boundaries. They're never gonna go anywhere. But I think it's also worldwide. ये boundaries होती हैं आपकी. Yes, because बाहर I feel कि because it's just the lack of education. I'll be very honest. Lack of art education. When you know you have more people who know, then you find those 4 people who understand you, then you make this little group that understands you और वो ग्रुप बड़ा होता जाता है. yeah, बाहर ये वेस्ट में हम ये देखते हैं बहुत ज्यादा कॉमन होता है that you know I'll have my little friends who like the same music because they understand the same music or they like the same art. यहाँ पर क्या होता है, हम बंद करते हैं, हमारी आर्ट एजुकेशन ही नहीं है, we don't. बात घूम फिर के वहां पे आ जाती है दोबारा से. इंडस्ट्री mm, में चेंज है mm, बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आ रहा है. एंड जो नॉस्टैल्जिया की जो हम बात करते हैं ना, इट्स रियली फनी. जो नॉस्टैल्जिया में नजर आ रहे हैं दैट्स एक्चुअली आज आर एज ग्रुप जिसको नॉस्टैल्जिया पसंद है, जो नॉस्टैल्जिया की तरफ चाहता है. जो यंगर जनरेशन है दे डोंट रियली केयर बिकॉज उनको तो right, पता ही नहीं आइडेंटिटी क्या है. एंड right, देयर इज अ ब्यूटिफुल अपराइजिंग इन पाकिस्तान व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. You look at brands like Rasta, you know, Rasta, yeah,
I think what Rasta has done, I met Zen when he was starting off, he was selling hoodies. And I met him, I still remember we met at Mocha, and he was this starry-eyed kid and he wanted to do things. And even then I saw this love, this respect for the culture. You know what he did? He went looking for his identity. He did a car ride from Lahore to Sindh and then all the way north so that he can learn the different embroideries that happen, the different prints that happen. And उसने क्या किया? He's like, मैं हुडी पहनता हूँ, मैं बड़ी ओवरसाइज शर्ट पहनता हूँ, सो क्यों ना मैं उसको अपने साथ मिक्स करूं, बिकॉज दैट इज माय कल्चर नाउ, बिकॉज दैट इज मी राइट नाउ, यू नो. सो वो हम जो यंगर क्राउड है ना, उसमें आप दिस अपराइजिंग देख रहे हैं व्हिच हैज नथिंग टू डू विद नॉस्टैल्जिया. इट इज अ beautiful amalgamation of culture with what is happening right now in the world. And you like I can't even like, because we live in our little bubbles, right? So मैं जब नहीं जाता था कॉलोनी और मैं नहीं देख रहा था तो मुझे नहीं नजर आ रहा था. But when I go and I see these young kids, and from the way they dress, the way they talk, the way that they think, the way that they're accepting, the way that they create music, the way that they're loving. But yes, there are small segments. They need to be bigger. पर वो होते जाएंगे. But nostalgia, because हम लोग उस एज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो नहीं होता कि आप जब कॉलेज से निकलते हो तो आप कहते हो हमारे जमाने में कॉलेज बहुत अच्छा होता था, कॉलेज खराब. अब कॉलेज का वो नहीं रहा जैसे पहले होता था. बट यू नो लाइक ऐसे नहीं होता. वो तब भी अच्छा था, वो उनके लिए अच्छा था, फिर हमारे लिए अच्छा हो गया. हम कहते हैं आप नोटिस कीजिएगा हर कॉलेज बस बुरा हो रहा है. बस हर कॉलेज जो है ना वो टाइम के साथ बुरा होता जा रहा है. और हर बंदा ये कहता है मेरे टाइम पे ज्यादा अच्छा था. पर अभी भी जो बंदा जा रहा है उसके लिए भी तो अच्छा ही है. बट इट्स जस्ट बिकॉज यू नो वी ग्रो आउट ऑफ इट एंड इट्स सम टाइम, सम पार्ट दैट वी लव्ड एंड एंजॉयड.